So today we are going to start with the next chapter, which is your locomotion and movement. So we are going to basically be talking about what are the different types of movement which any animal possesses. So there are mainly five types of movement. First is amoeboid, cyclosis, ciliary movement, flagellar movement, and the muscular movement. Okay. So what is this amoeboid movement? Amoeboid movement is basically found in the leukocytes, and leukocytes में कौन से cells आते हैं specifically? The phagocytes and the macrophages of the human lymphatic system. Okay, the phagocytes and the macrophages of the human lymphatic system. So they would particularly show this kind of movement. Cyclosis means जो भी movement अगर एक cell के अंदर whatever materials which have to be transported in a cell, they are included or they're transported by this particular mechanism, which is the cyclosis. Okay, so the cyclosis, it helps in the distribution of materials inside the cell. Third is the ciliary movement. Ciliary movement, that is, it helps in removing out the dust particles from the upper respiratory tract of the humans. Okay, so we already know that जो हमारा respiratory tract है, उसमें भी have got certain hair-like structures and इसमें बहुत सारे cilia भी present हैं. So what is the purpose of them? So they help in removing out the dust particles or whatever जो भी एयर के साथ में जो भी आपका वेस्ट मैटर या जो भी डस्ट मटेरियल्स के अलावा जो भी कंपोनेंट्स आते हैं उन सबको रिमूव करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द मूवमेंट विच इज शोन बाय सीलिया. एंड और सीलिया रेस्पिरेटरी ट्रैक के अलावा और सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सीलिया दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द fallopian tubes, vasa differentia of human females and males, and also मतलब ये जो आपके जेनाइटल ट्रैक्ट है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं आपके, वहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एंड वहां पे वो किस चीज के ट्रांसपोर्ट में या मूवमेंट में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ योर गैमीट्स, दैट इज योर एग एंड स्पर्म. जो फ्लैजेलर मूवमेंट है, यू ऑलरेडी नो स्पर्म इज मोटाइल इन नेचर, एंड स्पर्म के पास मोटिलिटी किस वजह से होती है? बिकॉज इट हैज अ टेल. ओके, एंड उसके पास जो उसमें वो जो द मोड ऑफ लोकोमोशन और द मूवमेंट जिस वजह से स्पर्म के अंदर लोकोमोशन होती है, दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द फ्लैजेला. सो दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन, इट इज एक्चुअली प्रेजेंट in your sperm. Next is the muscular movements. Obviously, the name itself suggests this muscular movement is present majorly in the different types of muscles. Okay. Now we are going to talk about the different types of muscles. So we know that there are three types of muscles mainly: the skeletal muscles, smooth muscles, and the cardiac muscles. Okay. So what are skeletal muscles? Skeletal muscles, they are found in the limbs, the body wall, the tongue, pharynx, and the beginning of the esophagus. Okay, so this is the region where the skeletal muscles would be present, and skeletal muscles, as the name itself suggests, it would be directly attached to a skeleton. जो भी skeletal portion है हमारी body में, उससे these muscles would be attached. And what is they are under control of any animal. Okay, if you want to move our hand, we can easily move it. If we do not want to move our hand, we won't move it. So basically, it is under our own voluntary control. So therefore, these skeletal muscles, they are voluntary in action. And what do they possess? They have a oxygen. They also possess an oxygen-carrying pigment in them, which is the myoglobin. Do not get confused with myoglobin and hemoglobin. Hemoglobin is the oxygen-carrying pigment which is present in our blood, but we give the name a myoglobin, which is present to the pigment which is present in our muscles. ठीक है? जो मसल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको सिंपली हम बस मायोग्लोबिन बोलते हैं. देयर इज मच डिफरेंस, बट व्हेनेवर यू आर यूजिंग द टर्म muscles, the word myoglobin would be used. Okay. Next is the smooth muscles. What are smooth muscles? They are found in the posterior part of esophagus, stomach, intestine, lungs, urinary bladder, blood vessels, dermis of skin, etc. And they do not connect with the skeleton. Okay. So मैंने आपको पहले भी बताया, these smooth muscles would be present in the visceral regions. Okay. That is your जो भी आपका intestine का region है या जो भी stomach का region है, वहां पे these smooth muscles would be present, and these muscles, they do not connect with the skeleton. Okay, they do not connect with the skeleton, and they are elongated and spindle shaped. Okay, so they are elongated and spindle shaped. So this is how
the smooth muscles are there. And इसके अलावा अच्छा, also one more thing, they are involuntary in control. They are not under our control, so therefore they are involuntary in nature. Involuntary, ठीक है. इसके बाद जो आपका एक और टाइप ऑफ मसल्स आता है, which is your cardiac muscles. Cardiac muscles आपके कहाँ पे मिलेंगे? That is, so your third type of muscles is your cardiac muscles. So where would these cardiac muscles be found? These cardiac muscles would be found in the walls of the heart. Okay, so they would be found in walls of the heart. Okay, so the word, we already know the word cardiac stands for the heart. So this is the region where these muscles would be present. ठीक है. अच्छा, इसमें जो कुछ characteristics होते हैं, they are very much similar with that of कुछ कुछ characteristics होते हैं जो resemble करते हैं skeletal muscles के साथ, and कुछ resemble करते हैं smooth muscles के साथ. Okay, and these fibers, they are actually uninucleate. ठीक है, ये कैसे होता है? These fibers are, so the fibers, they are actually uninucleate in nature. So the fibers are uninucleate. Okay, and इनके बीच में इनके पास cardiac muscles का एक special characteristic होता है, that is they have intercalated disc. So they help in intercalated discs. So what is the purpose of having these intercalated discs? So these intercalated discs, they help in transmission of muscle contraction wave from one fiber to the other. जैसे neurons में होता है कि for the quick transmission, muscle trans जो nerve impulse transmission होता है, that is very quick. Similarly, the same thing is there with the cardiac muscles. Cardiac muscles में there should be quick transmission of that impulse, and for that purpose they have the intercalated disc. Okay, and out of these muscles, which muscles never get fatigued? So the muscles which never get fatigued, they are the cardiac muscles. So they never get fatigued. Okay, so they never undergo fatigue. So these are the cardiac muscles. Okay, so these are the basic three types of muscles. Now we आपके जो chapter में है, which is that you have to study the detailed structure of the skeletal muscle. So you just quickly take a screenshot of this, and we start with the detailed structure of the skeletal muscles. Done? So next is your detailed structure of skeletal muscle. अच्छा, any skeletal muscle, how does it actually look like? So each skeletal muscle, it consists of numerous muscle fibers. ठीक है, जो हर एक skeletal muscle, so I'll keep writing down firstly. So each skeletal muscle consists of each skeletal muscle made of many muscle fibers. ठीक है, each skeletal muscle is made up of many muscle fibers, and these muscle fibers
They are syncytial in nature. These muscle fibers are syncytial in nature. What is the meaning of syncytial? Syncytial means that is they are multi-nucleated. So they are multi-nucleated in nature. Okay. And the membrane, जो membrane होती है muscle fiber की, the membrane of muscle fiber that is actually known as sarcolemma. So the membrane of muscle fiber that is known as sarcolemma. Okay, जैसे मतलब जो भी कोई भी मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वी कॉल इट एज सार्कोलेमा. ओके, एंड दिस इज वन थिंग. अनदर थिंग, एक तो ये इंपॉर्टेंट है दैट इज दे आर सिंसिशियल इन नेचर एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर दैट इज योर सार्कोलेमा. All the muscles they are covered by a dense sheet or irregular connective tissue. So all the muscle fibers they are basically they are covered by a dense sheet by a dense sheet of irregular connective tissue, covered by a dense irregular connective tissue which is known as fascia. Okay, so जितने भी मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में दे ऑल आर कवर्ड बाय अ डेंस शीट ऑफ एक कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज उस connective tissue with को we call it as fascia. And basically what is the purpose of this fascia? This fascia allows the free movement of muscles. ठीक है, if this fascia wouldn't have been there, so the muscles wouldn't have been able to move freely. ठीक है, so this kind of helps in providing a free space or free movement of the muscles. ठीक है, so it allows free movement of muscles and carries nerves, blood vessels, etc. Okay, so this is the purpose of fascia. We are talking about the introductory portion. So one more thing, that sarcolemma is invaginated to form T tubules. So this sarcolemma is invaginated to form T tubules. What is the meaning of this? Invagination matlab suppose if this is the sarcolemma, so this sarcolemma has certain invaginations like this. Okay, so this sort of invagination, this is known as your T tubules, and we'll see what is the purpose of having these T tubules जब हम study करेंगे कि how the muscle conduction impulse actually travels across the muscles. Okay, they form the T tubules, and its cytoplasm is known as sarcoplasm, which contains numerous mitochondria known as sarcosomes. So sarcolemma का जो cytoplasm है, cytoplasm को हम बोलते हैं, what do we call it? That is known as sarcoplasm. ठीक है, and this sarcoplasm contains and it contains many mitochondria, and these mitochondria they are known as sarcosomes. ठीक है, so अभी तक क्या पढ़ा कि the membrane of muscles that is known as sarcolemma, जो उसका cytoplasm होता है that is known as sarcoplasm, and there are many mitochondria which are present inside it, and those mitochondria they are known as sarcosomes. Okay, so this is the general basic introduction. अच्छा, अब यहाँ से हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे कि each muscle fiber it contains many myofibrils. So each muscle fiber contains many myofibrils. Okay, so each muscle fiber it contains many myofibrils which have certain striations. Okay, so पहले हम
देखेंगे कि हाउ डज इट एक्चुअली लुक लाइक। सपोज तो सबसे पहले कोई भी मसल कैसे लगती है। सपोज इफ दिस इज अ मसल, ठीक है, कोई भी जो मसल होती है, दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक। सो दिस इज योर मसल। तो मसल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इट हैज मेनी स्ट्राइएशंस, ठीक है। सो सपोज ऐसे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं मसल्स के अंदर। अगर आप किसी भी मसल को देखोगे सो यू विल बी एबल टू सी इट लाइक दिस, वो ऐसी दिखेगी। सो दिस इज एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एज मसल fasciculus। हम एक सिंगल मसल की बात करें सो दैट इज नोन एज fasciculus। अगर बहुत सारी की होती है तो वी वुड हैव कॉल्ड इट fascia। ओके, अच्छा अब और मसल fasciculus को और ज्यादा डिटेल में अगर देखते हैं तो ये कैसा लगेगा। अगर इसका हम सिर्फ एक ये पर्टिकुलर रीजन को एनलार्ज करते हैं तो हाउ वुड इट लुक लाइक। इसमें हमको मिलेंगे बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स। और ये मायोफाइब्रिल्स कैसे लगेंगे। Again the same thing, basically we are enlarging just the other thing, इसमें से इस पोर्शन को भी have enlarged। अगेन यहाँ पे the same thing would be there, ऐसे ही बैंड्स के जैसा आपको दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे what will be there, यहाँ पे you can see many myofibrils। मैंने अभी आपको क्या बोला कि each muscle is actually composed of, each muscle fiber is actually composed of many fibrils which are known as myofibrils, ठीक है। So what are these known as, these are your myofibrils। So this is your myofibril, ठीक है। और इस मायोफाइब्रिल पे कैसे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी ये एक मायोफाइब्रिल है तो इस पे कैसे कैसे बैंड्स प्रेजेंट होंगे। अब हम इस एक बैंड को एक्चुअली वी विल बी एनलार्जिंग दिस वन पर्टिकुलर बैंड, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे इस रीजन को वी आर एनलार्जिंग, सो हाउ इज दिस रीजन गोइंग टू लुक लाइक। अच्छा इसको हम बोलेंगे दिस इज नोन एज योर मसल फाइबर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज सिंपली मसल सेट, ठीक है। इसके बाद अब जो हमको एक्चुअल में जिसका हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं वो है आपका दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है आपके। देखो each muscle fiber is composed of light and your dark bands।
ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। हमने इस इतने से पोर्शन को वी हैव एनलार्ज्ड, ठीक है। अब इसमें आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है, अभी इसको मैं डिटेल में मेक यू राइट इट डाउन। जो जो ये देखो, एक तो ये जो डार्क रीजन है, सबसे पहले तो दैट इज नोन एज योर ए बैंड। जो बैंड्स होते हैं, ये जहाँ पे ये बैंड्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर योर ए बैंड्स, ठीक है। ए बैंड्स आर द डार्क बैंड्स and I bands are your light bands, ठीक है। So firstly I'll draw the diagram and then I'll make you write down the description. So जहाँ पे भी ये जितना भी ये dark region है, so from this region to this region it is your A band, ठीक है। This is your A band and ये जो थोड़ा सा रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है दोनों तरफ से, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जहां पे ये आपका डार्क लाइन प्रेजेंट नहीं है, दैट इज एक्चुअली योर आई बैंड। I band actually stands for your isotropic band and A band stands for your anisotropic band. And ये जो बीच में dotted line आप देख रहे हैं, this is actually your H zone. So this is your H zone, ठीक है? And this actually comprises of your myofibril. So मैंने यहाँ पे जो myofibril को यहाँ पे लेबल किया है, this myofibril in enlarged form, it actually looks like this. Okay, so this is how it looks like. And और क्या होगा, ठीक है। now we are firstly going to write down the description here and then we'll see how it looks like, ठीक है। So you firstly take a screenshot of this and then so that I can write down the description. Done? So a myofibril has dark and light bands. So a myofibril has dark and light bands. Okay, so myofibril has dark and light bands. Dark bands, they are known as A bands. Dark bands, they are known as your A bands. And A bands, what does this A stand for? It stands for anisotropic. Anisotropic. Okay, so this is your A band. These are your A bands. So A band stands for anisotropic or the dark bands. And जो light bands होते हैं, they are known as your I bands. So your light bands are I bands or your isotropic bands, ठीक है। Light bands or the I bands, right? अच्छा, and at the center of A band, a comparatively less dark zone is present, which is known as your H zone. So at the center of A band, a comparatively less dark area is present and it is known as H zone, ठीक है, that is known as H zone. तो यहाँ पे H zone कौन सा है, यहाँ पे ये देखो, ये जो लाइन ड्रॉ किया है, ये जो लाइन ड्रॉ किया है, बोथ ऑफ दीज दे आर दी A bands एंड इन A bands के सेंटर में ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, दैट इज योर H zone, ठीक है। दिस H zone एक्चुअली स्टैंड्स फॉर योर Henson zone, ठीक है।
and in the center of H zone is actually your M line. तो M line को हम इसमें शो नहीं करेंगे. वेट, लेट मी फर्स्ट इसको थोड़ा और डायग्राम को बड़ा करते हैं. ठीक, सी. अब देखो इसमें मैंने बोला जो ए बैंड के सेंटर में जो डॉटेड लाइन आएगी दैट विल बी योर एच जोन. ठीक है. एंड इसमें बोला है कि एम लाइन प्रेजेंट होती है. एम लाइन कौन सी होती है आपके? एम लाइन आपको जब विजिबल होगी जब हम इस वाले के स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा एनलार्ज करेंगे. ठीक है. सो आपका इसमें एच जोन विजिबल है, आपका ए बैंड विजिबल है, आई बैंड विजिबल है. ठीक है. अब ये यहाँ पे एक चीज आपको ऐड करनी है. यहाँ पे ये जो मैंने ब्लैक से लाइन ड्रॉ की, दिस इज योर जेड लाइन एंड दिस इज ऑल्सो योर जेड लाइन. ठीक है. एंड द रीजन बिटवीन the two Z lines, it actually comprises of sarcomere. We'll write, see all that, what is actually a sarcomere. ठीक है. And then बाद में now we will further later on enlarge the sarcomere. Okay. So अभी तक क्या बोला कि myofibril it is actually composed of dark and light bands. ये सब जो आपको दिख रहे हैं these are the various bands, and when we actually keep on enlarging each and every structure, this is how it looks like. ठीक है. Now, at the center of A band, there's a comparatively less dark area which is present known as the H zone. ठीक है. And in the center of H zone, there is your NM line. In the center of H zone, there is M line. ठीक है. H zone के center में आपकी क्या होगा? There will be your M line, right? Now, each I band has at its center a dark membrane known as Z line. Now, this is very important.